Some patience. So here we go. Hello, everyone. Hope you all are doing fabulous this evening. We haven't met, I believe, right, Harry? This is the first time yes, yes. This is a completely fresh batch that you're dealing with. Okay. Well, my name is Sakshi Shekhar. I'm a nutritionist by profession, and I welcome you on behalf of Forever Star India, Mrs. India 2021, for this short and interesting session focusing on what you're going to eat. So all of you are looking vibrant today. And to maintain this vibrance and confidence, I would like to quickly request you to all of you to raise your right hand and say, I'm watching you all. Raise your right hand and pledge, मैं जो खाऊंगी clean खाऊंगी और clean के सिवा कुछ नहीं खाऊंगी. This is how we're going to begin our session. Thank you. So here we go. So the crown is really, really coming close to you. Don't you all think so? And once you both are going to clash, you and the crown, I'm sure they're going to be fireworks, ladies, because you're all there, celebrities out there on Instagram. I've been following, a lot of reels and videos, and you're looking fabulous out there on the social media. So I would like to congratulate each one of you firstly, and don't leave any stone unturned, especially on terms of health, because you're going to work really, really hard, physically also, and out there on the ramp, practicing, doing your creatives. So you got to be strong inside out. Here's a little bit about me. I have been working for the Magic Platter. I'm the owner and founder of the Magic Platter, and I have been, working across 14 countries. My clients are based across the globe. I love to make amazing transformation in people because, helping people achieve their goal is such a satisfying feeling. So here I am to do my contribution to you all. But before I begin, I would like you to do a small homework. I'm sharing a Google form shortly with you, requesting you to kindly, fill it up. And this will help me understand what your current health situations are. So once you fill this up, you can share it by pressing the submit button. This form is very simple and self-explanatory. However, if you feel there is any doubt, you can reach on to my number. I am sharing my number on the Google form, and you have a notepad, you can write it down, 9007 352136. You can, check with me if you have any doubts in filling up the form. I'm just sharing the form with you. Kindly open it on your phones and devices and save it. Give me a moment, ladies. Here it is in your chat boxes. Kindly have a look. Yes, I would like you to fill up this form and submit it to me by tomorrow, so I can just personally look into your health status and your physiological conditions. So here we proceed. I hope everybody's copied the forms. You can raise your hands if you've. So I would like to begin with a question. And it's a very simple one.
You don't have to go by the knowledge that you have. I want you to go by what you've been doing all this while. Okay. Sakshi, I'm so sorry to interrupt, but there are some women in the chat box saying that it shows it's unable to open Okay. the form. Yeah. Let me try this. It won't open right now. I tried it, but we have to copy and save it. Then it's opening in Chrome. Okay. I tried it. Thank you so much for that. This is for everyone. So Haley, thank you so much. So you could save Yeah, the link you're as of welcome. now and open it later while you are away from the Zoom meeting. Okay. And I think we can share it again in the end, Sakshi. I think that would be even better. So coming back to my question, this food group is the best source of energy. We all may be knowing it by knowledge कि best source of energy हमारी क्या होती है, but I would like to know more personally कि जब आपको hunger pangs आते हैं या फिर you're feeling low or you want to go to the gym और उसके पहले आपको कुछ खाना है, वो source of energy चाहिए, तो what exactly you look for in your refrigerator, in your storage? So do you look for a meat group or bread and cereals or anything which is fried and sugary, which is like a quick fix, or some milk product? So you can write in the chat box A, B, C, or D, and I will read through your answers. Okay. I see a lot of, yeah, I want the answer from the sections given, A, B, C, or D. Sneha says B. Ayushi says B. Okay. Absolutely correct. Namrata, yes. The answer is bread and cereals, because, see, here we go. This is the immediate source of energy that you can get before you go to the gym or you have hunger pangs. ये एक ऐसा source है जो immediately break down करके energy देता है. So all of these are, yes, protein है, लेकिन usually what, protein takes a little bit of extra time to break down and give you energy. इसलिए protein हम बाद में खाते हैं when we are coming out of the gym. So best source of energy if you want to feel a little, you're feeling low. अक्सर क्या होता है, people go ahead and have some sugary stuff. बिस्किट का टुकड़ा, थोड़े से राइस फ्लेक्स या फिर कोई कैंडी फटाफट से या फिर चाय, सबकी फेवरेट, तो ये हो जाता है अक्सर. लेकिन इंस्टेड अगर आपने एक ब्रेड का पीस खा लिया विद पीनट बटर या फिर एक मरी बिस्किट खा लिया, लो कैल बिस्किट है वो, in that case probably you will feel more energetic within 10-15 minutes of time. So this was just a starter. Let's begin. I would like Sapna Singh to read this, please. Can you unmute your microphone and kindly read this? What is a calorie? Yes, yes, sure, I can read. Am I audible? Yes, you are. Yeah. Calories, tiny creatures that live in your closet and sew your clothes a little tighter each night. Yes, there is some reality in this, isn't it? Yeah, you can say that. Okay, thank you so much, Sapna. Thank you. Thank well, the definition by physics. A calorie is the energy, by definition, a calorie is the energy it takes to raise a temperature of 1 gram of water by 1 degree centigrade. We have all read it in class 10th. By dietetics, calorie is basically energy that fuels our body. Without sufficient calories, our heart would not beat, our lungs would not function, and our brains would not work. Basically, ये जो काया है, वो बंद पड़ जाएगी. It will be inoperative. So, ये है फंक्शन कैलोरीज का. बहुत इंटरेस्टिंग मैं एक चीज शेयर करना चाहूंगी इसके बाद कि यस, फूड वॉल्यूम वर्सेस कैलोरी डेंसिटी. So you see that there are some food items kept in here.
There's celery, which is almost 1.5 kgs. There's broccoli, there is carrot, apples, and all of this. Can you see the amount of stuff kept in here and the amount of stuff kept in here? और ये सारे 200 कैलोरीज के हैं. तो जब हम डाइट करते हैं फॉर एग्जांपल, तो अक्सर लोग पूछते हैं मेरा खाना तो नहीं बंद कर दोगे साक्षी, राइस तो नहीं चली जाएगी, चाय तो नहीं चली जाएगी. अगर आप क्लेवरली खाते हो तो आपको बहुत खाना पड़ता है एक्चुअली. और मेरे क्लाइंट्स अक्सर कहते भी हैं कि आर यू श्योर ये खाना खाने से हम पतले होंगे या मोटे तो नहीं हो जाएंगे, क्योंकि दे आर ईटिंग सो मच थ्रू आउट द डे. बट यू हैव टू ईट स्मार्टली. अगर हम फूड वॉल्यूम कंसिडर करें तो बहुत सारी चीजों से हम अपना पेट आराम से भर सकते हैं. ऑब्वियसली आप 1.5 किलो ऑफ सेलरी नहीं खा सकते, या एट अ गो 600 ग्राम्स ऑफ ब्रोकली नहीं खा सकते, राइट. बट अगर हम उसको प्रॉपर्ली बैलेंस करें थ्रू आउट द डे में, आप पूरे टाइम फुल रहोगे एंड यू वुड नॉट इवन नो के यू आर ऑन अ डाइट. यू विल फील हेल्दी. अपार्ट फ्रॉम बीइंग एनर्जेटिक, यू विल फील कि डाइजेशन अच्छी हो रही है, यू आर फीलिंग moods अच्छे हैं आपके पूरे दिन भर में. So these are the benefits of choosing your food smartly. Another example, food volume और calorie density का. ये देखो, आप ऑयल देख सकते हो यहाँ पर 500 कैलोरीज है ये वाली, जो आपके स्टमक में कैसी दिखती है. ऑयल इज दिस मच, चीज इज दिस, मीट इज दिस, potatoes, rice, beans, basically carbohydrate rich food is this, and fruits and vegetables इतना जगह लेते हैं क्योंकि इसको डाइजेस्ट करने में वक्त लगता है. when the digestion is slowed down, it just gets easier. It makes you feel full for a longer period of time. So this is how you can smartly choose your food. So why stay hungry, जब हम diet कर रहे हो, why starve when you have so much of option, and especially you can cook cleverly, and you can make your food tastier. Can you spot the difference, ladies? Tell me which of these plates, A or B, has higher number of calories. I'll check the chat box again. Yeah. B, A, Anjali says B. B has higher number of calories. Okay, A. Okay, those who have said A, इस प्लेट में 905 कैलोरीज है एंड बी में सिर्फ 550. सो जिसने भी बी कहा, क्लैप फॉर योरसेल्फ. पर ऐसा क्यों है? क्योंकि हमने सेम प्लेट को बहुत ही वाइजली बनाया है बी में. लेट मी शो यू हाउ. ये दोनों ही फ्राइड राइस है. लेट मी क्विकली टेल यू इसके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं. जैसे फॉर ए उन्होंने यूज किया है ब्राउन राइस, कैप्सिकम, पीज, कॉर्न, एग, सोय सॉस, कैरेट्स, चिकन एंड 2 टेबलस्पून ऑफ ऑयल. ये सब मिलकर मतलब ये कैलोरीज काउंटेड है, तो ये सब मिलकर 905 कैलोरीज बनती है. वेरी क्लेवरली जब हमने बी प्लेट बनाया तो उसमें हमने यूज किया है, ये जो आप देख रहे हो, 50% हमने 50% ब्राउन राइस यूज किया है और 50% हमने यूज किया है कॉलीफ्लावर राइस. So it is very trending. You must have heard a lot about cauliflower rice in keto diet especially. So you can very smartly convert the same plate into, आपने 50-50 कर दिया अपने कार्बोहाइड्रेट को, और कॉलीफ्लावर आपने यूज कर लिया इंस्टेड ऑफ राइस, और कैप्सिकम, पीस, कॉर्न, कैरेट्स सब कुछ है इसमें. एडिशनल बीन्स भी हैं जिससे डाइजेस्टिबिलिटी हमारी स्लो डाउन होती है एंड इट फिल्स यू फर्दर वेरी वेल. So this is how you can construct your plate similarly, थोड़े बहुत changes करके. What is a balanced diet really? मतलब whichever dietitian you speak to, they'll always say balanced diet खाना है, balanced diet खाना है. You see this picture, this very interesting picture. It's very important to have a balanced diet, but how is she balancing her diet? I mean, एक तो ये तरीका है, और दूसरा तरीका मैंने सुना है बहुत ही क्लाइंट से, बहुत सारे क्लाइंट से, कि उन्होंने कहा कि सारा दिन साक्षी मैंने बहुत अच्छे से खाया, आई कंट्रोल्ड माय कार्ब्स, आई कंट्रोल्ड माय फैट इनटेक, लेकिन मैंने उनको ऐसा सजेस्ट नहीं किया था. बाय द नाइट पता नहीं मुझे क्या हो जाता है, मैंने एक ओरियो का पैकेट खा लिया. तो फिर कार्ब्स खाना जरूरी है ना,
क्योंकि अगर आप सारा दिन अगर आपने अपने आप को डिप्राइव किया है, जो कि मैंने सजेस्ट नहीं किया था, मतलब sometimes people are really in hurry and they want to lose weight faster, so they take additional steps more than I have suggested. So जब मैंने कार्ब्स दिया और आपने कार्ब्स नहीं खाए तो शाम में तो आपको क्रेविंग होगी. सो इसीलिए जब आपको कोई कार्बोहाइड्रेट के लिए कहता है कि आपको खाने की जरूरत है, उसकी एक रिक्वायरमेंट है बॉडी में और इसलिए हमें वो खाना ही है. सो हेंस this is not what a balanced diet looks like, definitely not, and neither the one that I told you about. A diet consisting of variety of different types of food and providing adequate amount of the nutrient necessary for the good health is what is a balanced diet. So I want one of the meals of your day to be shared on Instagram, because I don't know if it will be how it will be taken up. If it is possible, we can do the small game. Kal, aaj to the day is over. Tomorrow you can share your healthiest meal of the day and tag us, and we can just reshare your trend, your howsoever it can be done. I don't know, we'll interact about it later with Harry and Kirti. So I would like to see what is the healthiest meal that you are having tomorrow. So let's see, you can tag me as well, and probably we can decide ki kiska platter was sabse magical. See, the 5 food groups I talked about, jo maine kaha, different types of food. This exactly is what I'm talking about. I'm sure most of you must have seen this pyramid. It's very, very basic. So these are the 5 food groups जो हमें cover करने हैं सारे दिन में, और ये करते करते आप बहुत ही आसानी से अपने डाइट को fulfill कर सकते हो. So basically ये जो है fruits and vegetables, ये हमें 5 portions खाने हैं. आप कैसे खा सकते हो 5 portions? आपने अपने breakfast cereal में add कर लिया bananas for example, या bread के ऊपर peanut butter and banana का एक filling एक लगा लिया, या फिर आपने mid morning snack में एक fruit खा लिया, maybe an orange or a guava around 100 grams वैसे खा लिया, या फिर आपने अपने lunch में if you add some salad to your lunch, और evening में आपने अपनी एक soup पी लिया, vegetable soup. This is how you can incorporate this in your diet very easily, क्योंकि शायद हर वक्त सब्जियां खाना सब लोगों को पसंद नहीं है, I suppose. So there are various ways that you can incorporate these in your diet. Coming to starchy food, I am sure जब भी हम starchy food का नाम लेते हैं, सबसे पहले हमारा दुश्मन हमें याद आता है, वो है potato. Poor potato, उसकी कोई गलती नहीं है, लेकिन फिर भी वो blame होता है हर वक्त, लेकिन when it comes to having your complete meal, it is very important to include everything. हाँ, there are times when we go on a low carb diet, तब initially हम उनको मना करते हैं या reduce कर देते हैं quantity, but potato आपका दुश्मन नहीं है at any cost. ठीक है, potato, bread, rice, pasta has to be a part of your diet, and it involves around 6 to 11 servings, you see. So they are really good source of calcium, iron, potassium, vitamin. तो इसकी जरूरत है हमारी बॉडी को, तो बिल्कुल नो कार्ब पे मत जाना कभी भी. Try not to add extra fat. अब मैंने कहा कि नो कार्ब पे मत जाना, तो पराठे नहीं बनाने हमें, या फिर mashed potato with cheese नहीं खाना. So we will go थोड़ा सा easy on this. Obviously there are people who like to eat sweet, तो bread के ऊपर jam है, extra spread है, तो वो सब चीजें हम avoid कर सकते हैं. We can still have a carbohydrate. Next comes our dairy. Again, dairy and milk and milk products basically, obviously हमें सबको पता है कि calcium, proteins ये सब हमें deliver करते हैं. क्या तरीका है इससे low fat, low calories consume करने का? हमने calories के बारे में आगे सुना, तो हम अगर skimmed milk लें या semi skimmed milk लें, double tone milk लें, या फिर fat percentage जिसमें कम हो वो consider करके ले, तो हमें बहुत फायदा हो सकेगा. हमारी calcium intact रहेगी, बस हमारा fat intake उससे या फिर कैलोरी इनटेक थोड़ी रिड्यूस हो जाती है कमिंग फ्रॉम द फैट पोर्शन. तो ये हम कर सकते हैं. और जिन लोगों को, जो लोग लैक्टोज इंटॉलरेंट हैं, उनके लिए भी देयर आर सो मेनी प्रोडक्ट्स इन द मार्केट नाउ. देयर इज सोय मिल्क एंड आलमंड मिल्क, आप वो सब भी चूज कर सकते हो.
these products जो अभी हमारे मिल्क पैकेट्स आ रहे हैं, these are fortified ones. तो हमारा कैल्शियम, विटामिन डी वो सब हमारा सॉर्टेड होता है when we are having these packed milk. So if you are up for a fresh milk, there's no say in it. But even if you're having packaged milk, that's perfectly fine, because it is all supplemented and fortified with calcium and vitamin D. So this is it. Of course, we have to limit on certain things. अब बहुत सारा चीज नहीं खाना just because it's healthy, right? We all know that. Coming to protein, what is your favorite protein? Can you write in the chat box and let me know? Yes, Dr. Pratibha Singh, I read your comment. Eggs, meat, groundnuts. Yes. Inal says moong is a favorite. Okay. Lovely. Everybody is equipped with their nutrition. I already love it. Yes. Highest biological value के हिसाब से egg सबसे important है हमारी protein requirement को पूरी करने के लिए. इसके अलावा we have pulses. Pulses हमारी beans, peas, lentils इन सब से हमें मिल जाती है और fiber भी देती है, vitamins, minerals भी देती है. तो one pulses for vegetarians. We'll start with vegetarians. Of course, pulses से हम soups भी बना सकते हैं, casseroles भी बना सकते हैं. Can you all tell me कि अगर आपको मैंने कहा कि complete protein लेनी है, तो would you go for dal or would you go for khichdi? So I'm waiting for your answers in the comment box. Khichdi, Dr. Pratibha Singh, khichdi, dal. So those who said khichdi, you can give a pat on your back. Yes, it is khichdi, because पुराने जमाने से कहा जा रहा है कि जब कोई बीमार पड़ता है उसे खिचड़ी दो. हम उसे पनिशमेंट के तौर पे लेते थे when our grannies used to give that. लेकिन खिचड़ी में जो कॉम्बिनेशन है राइस और दाल का, so one of rice basically has an amino acid which is missing in the dal, and dal has an amino acid. Amino acid is the smallest unit of protein. So दाल में एक ऐसा amino acid है जो राइस में मिसिंग है और दोनों मिलकर एक perfect complete protein बनाता है. इसलिए खिचड़ी is more proteinous than दाल. So अगर आपको ऑप्शन है कि आप खिचड़ी बना लो फटाफट से, you're a working lady and you have to complete your protein also, then khichdi is the way to go. So congratulations, ladies. So many people are already aware. Yes, desi ghee also. Why miss the desi ghee with khichdi? And fish eaters, of course, great source of protein. Small fishes are rich in calcium also, तो आप वो भी कर सकते हो. आप one portion of fish at least twice or thrice in a week ले सकते हो. 140 grams होते हैं one portion लगभग. Yes, choose fresh over frozen. That will be more healthier. And oil-rich fishes जो होती है जैसे कि salmon, it will help you yield the omega-3 requirements. अगर आप fish eater नहीं है तो आप straight away वो चीजें walnuts या ऑलिव ऑयल या फिर आप सप्लीमेंट के थ्रू ले सकते हो. सो ऑयल रिच फिशेस एक्चुअली विटामिन ए और डी भी डिलीवर करती हैं आपको. सो दिस इज अबाउट द प्रोटीन. Of course, there's also meat, chicken, etc. So you have to be just careful with the way you handle, cleanliness and hygiene and everything, and you are sorted. Last but not the least, fat, जिसको सबसे ज़्यादा discriminate करते हैं लोग कि even if I give this diet और उसमें fat रहता है कि you are allowed to have this much of fat in your diet, people don't use fat at all क्योंकि actually fat involuntary functions के लिए कितना useful है. It helps you even आपके skin को भी it gives moisture, and internal organs को भी it gives flexibility. But people just remove fat के fat से ही मोटे हो रहे, जबकि carbohydrate अगर आप excess में ले रहे हो, अगर आप crave कर रहे हो तो बहुत बहुत difficult हो जाता है. जबकि अगर आपने proper देसी घी खाई है, जैसे somebody also wrote in the chat box, तो आपकी satiety बहुत ज्यादा होती है and you don't feel like कि आप भूखे हो या you are on diet
I would always encourage people to eat desi ghee in their diet for that matter. So it will fight fatigue also. ये oil का एक बहुत खासियत है oil की fat की कि आपके blood कुछ especially कुछ oils जो coconut oil for example, it crosses the blood brain barrier and it helps you take better decisions also. तो ये सारी चीजें बहुत simple हैं, but छोटी छोटी चीजें अगर आप देखोगे इसमें छोटे छोटे pointers जो मैंने कहे आपको काफी you will feel really helpful if you are implementing, क्योंकि आप you'll feel the diet is like a very easy stuff to do अगर आप ये follow करते हो. So there was this post of mine on Instagram that was shared by the team of Forever Star, wherein we had a word, like me and Kirti had a word over this, that I would answer all the questions that were shared in this. There were the questions that were asked in this Instagram post. So one of the questions that came repeatedly was about acne. The other question was क्या हम तंदूरी चिकन खा सकते हैं या स्मोक चिकन जब हम आ जाते हैं, तो we'll come to it, but पहले acne से fight करते हैं. So I hope you all are having your water because I am. चलो डाइट और एक्ने बहुत डिबेटेबल टॉपिक है और अभी भी देयर आर रिसर्चेस गोइंग ऑन कि क्या डाइट से एक्ने इंप्रूव हो सकता है ओवर द पीरियड. बट I have done the research myself and I see that diet does not heal anything for it. It does not heal anything immediately, क्योंकि आपको एक persistent चीज maintain करनी होती है day after day, and then it finally shows on your skin, even your health situations. If you have a physiological situation, तो वो एक दिन में it does not go better. It has to be done repeatedly. या फिर आप कोई भी चीजें consistently करते हो तो कहते हैं ना कि नदी भी पत्थर में निशान छोड़ आती है, उस तरीके से if you're doing something continuously, it really makes a difference. So diet and acne, I would really come to it. बट ये जो आप देख रहे हो, ये जो सारी चीजें हैं, अगर आप ये कवर करते हो तो बहुत हद तक यू कैन सेव योर सेल्फ फ्रॉम गेटिंग इट वर्स. सो ऑब्वियसली जो जैसे अगर हम फ्लॉलेस स्किन रखते हैं या फिर होती है हमारी, तो वो जो कॉन्फिडेंस हम एक्सुबरेट करते हैं, दैट इज इन नो कॉम्पिटिशन विथ एनीथिंग. सो इट इज इम्पॉर्टेंट टू फील ब्यूटिफुल इनसाइड आउट. अगेन beauty, I'm so sorry. Yes. So beauty is no longer perceived, as mere indulgence in overloaded skincare, या फिर, overloaded makeup products, या फिर lot of, application of, there's so many products in the market shelf right now. So rather it's a form of self-care, right? More of nourishment, more of supporting your skin, loving your skin every day. This is how you truly look beautiful. So it's very important कि अगर you have to improve any of these situations, not only acne but overall skin improve करने के लिए hydration is the key. आपने बहुत ही सुना होगा ये, क्योंकि 70% हमारी skin cell is made up of water. So it clearly implies to जो सारी flexibility है हमारे skin की, it is coming from water. और water intake आप दूसरे forms में भी कर सकते हो. For example, juices, especially the ones that are rich in bioflavonoids. So bright yellow color fruit or orange color juices, आप ये सारी चीजें add कर सकते हो अपने diet में. आप green tea add कर सकते हो, the antioxidants जो we'll come to it later. So you can fulfill your, hydration in many ways. A lot of fruits and vegetables have water. So green juices, for example, आप वो भी ले सकते हो. Coming to protein, the building block, सिर्फ इसका काम reparation और recovery के लिए नहीं होता, muscle recovery के लिए, बल्कि skin के लिए बहुत important role है. So keratin, collagen, elastin, ये सब का नाम आपने सुना ही होगा. These are proteins that helps your skin look healthy. So they provide elasticity and tenacity to your skin. So a lot of proteins are already there in the Indian diet. Say abhi humne baat bhi ki
So there's fish, chicken, eggs, pulses, sprouts, all of this soya bean, and so many. So we can have this on a regular basis, daily basis, every meal, and then you can, check your status of your skin, say 7-10 days in a row. So it really improves your skin, hair, nails, everything. So this is it. We come to the vitamins A, C, and E. Basically, these are the antioxidants which help reduce free radicals and slow down damage to the skin. So these would help you prevent, for example, vitamin A would help you prevent the damage from the sun, and improves the skin resilience towards pollutants, irritants, etc. Vitamin C is usually available in broccoli, bean sprouts, citrus fruits. तो ये भी हमें एक antioxidant है which helps our skin really well. Vitamin E is thoda scarcely available, in the food, but wheat germ oil or safflower में it is available. तो अगर आप vitamin E consume करना चाहें in a form of supplement या apply करना चाहें over your skin, you can use it. Always मैं हमेशा कहूंगी अगर आपको already बहुत सारा acne, क्योंकि there are varieties of acne also. It's not just about the gut related कि आपकी indigestion है, या अक्सर लोग कहते हैं पेट साफ नहीं हुआ होगा. पता नहीं जिनका भी acne होता है अक्सर लोग ऐसे आके कहते हैं, and this is so embarrassing. I myself suffered it and it's my personal experience. So it's not about the indigestion all the time. There could be hormonal acne, there could be external factors like bacterial infection, there could be other things like abhi latest मैंने सुना है mask acne, because people are wearing mask all the time because it's dirty and the pollutants are getting stuck in the mask. So mask acne is also, so there are so many kinds. So सिर्फ एक kind of diet से it cannot be healed. You have to not only take care internally but also external care भी आपको लेनी पड़ेगी. You have to meet your dermatologist for that. So this is it. Zinc, zinc rich food जो है जैसे कि whole wheat flour, pumpkin flour, seeds and oat flour actually helps in reducing inflammation, infections. तो ये जरूरी है अगर already you're suffering, तो आप zinc rich food भी खा सकते हो. And selenium, it is also very good for your hair. जैसे कि हम अभी बहुत सारे products in the market are selling this onion oil products, है ना, जो hair scalp के लिए, और हमने भी घर पे कभी ना कभी onion mask लगाया है. So these are rich in selenium and they're really, really good for your hair also. These items are, selenium is available in food items like garlic, onion, wheat germ, Brazil nuts. So you can add this to your diet for a healthy, glowy skin. Again, essential fatty acids, हमने पहले ही बात की इसके बारे में. These are omega-3 fatty acids and omega-6 fatty acids. They are available in walnuts, olive oil, and fish, oil-rich fish, जो हमने अभी कहा था. You can also, because essential है ये, body नहीं बनाती है इसे, तो हमें इसको externally लेना जरूरी है. So hence, essential fatty acids is one of the key factor. B complex vitamins, again, you must have seen somebody suffer from, torn corners of the mouth or dermatitis, या फिर dry and itchy skin conditions. These are all causes of vitamin B complex. अगर वो कम है तो you will feel that these things are coming up in. Also मैंने कई बार देखा ulcers जब होते हैं तो people prefer to have with vitamin B complex. So vitamin B complex basically हमारे बहुत सारे खाने में भी available है. You don't really have to go for the supplements. You can completely have it from milk, cheese, egg, liver, green vegetables, etc. So bottom line for acne and diet के relationship पे मेरा यही है कि it's not about only food. External factors बहुत matter करते हैं. So definitely see a dermatologist firstly. Secondly, improve your food intake correctly on daily basis. You can have low glycemic index food, complex carbs, for example, and complex carbs may include whole grains, legumes, unprocessed fruit, यानी कि fresh fruits and vegetables basically. So you can do that. Then जैसे मैंने कहा mineral zinc जो है उसे add करो आप अपने diet में, vitamin A और E add करो, antioxidant, and you'll be really, really sorted to an extent. But यही है कि diet influences acne. It may not heal.
So this is my final verdict on diet and acne. These are my lovely clients I would like to share with, because when you have a flawless skin and you have better body and everything, you feel really, really confident when you're walking on that ramp, isn't it? And the time is coming closer. So I would like to share with you this lovely lady, Yamini Dogra. She is being crowned Mrs. India by one of the pageant recently, and she's heading for Mrs. Universe. By the way, she had thyroid and she still managed to lose 12 kilos, and she's looking wonderful and confident. Look at the way she's standing. This is what shows that confidence, isn't it? I would like you to especially notice some of the things that I talk about mostly. So experience, my energy level and body strength has increased, which I always vouch upon whenever I'm talking to anyone about diet. Confidence, of course, glowing skin, and personalized meal plan. So whenever you hear a generalized information, even if it is coming from anyone, say right now also I may have given away some generalized information. Your body is different, and each of you are different. So always, consider your medical practitioner, your dietitian, before you're following any advice from anyone, any random person, because I do not know your history, or any random person on the internet does not know your history. And there are hundreds of articles prevalent, right? So you got to listen to your body and consider your personal dietitian for any kind of changes that you're making in your diet. She says that she didn't starve and she ate clean and healthy. So, and changing the lifestyle, which I'm continuously talking about, कि daily basis पे you have to do it, because fitness is a lifestyle. ये 2 महीने आप जो अभी, you will be definitely working hard over yourself, right? But you got to work hard उसके बाद भी, because you have more targets to achieve, not only this. So this is one. When she's crowned very recently, last week, and she's heading further. And this lady, again, she lost around 10, and further she was suffering from PCOD. She's a fitness trainer, by the way, now, because the kind of, interactions we had during her session, she was so motivated to learn about fitness. I'm so proud of her that she's today, running her own business, and she is a fitness trainer herself. So this is from my end. You can scan this for reaching me on WhatsApp, this for Instagram. I'll be sharing the links shortly in your chat box. We can connect further from here. And if you have any doubts regarding the session today, you can reach directly to me. Somebody says coconut oil application at night is beneficial if suffering from acne problem. Ankita says so. Well, it depends on person to person again. It may suit one person and not suit the other one. So these generalized informations are very, very dangerous. Yes, Naomi says it may, yes, exactly. It may work for one person. That's why I'm coaxing everyone to, reach to a specialist in this case. Food से आप अपने आप को nourish कर सकते हो, but if you really have an acne issue, do not listen to any random advices over the internet. Never. Not for acne, neither for any diseases. So this is my bit from my side. Thank you so much for your time. I'm going to share my details in the chat box shortly, and also the Google form. You can find me here, and I've already shared my number. You can, if you are stuck anywhere in the Google form that I'm sharing, because you know what I've planned to maintain your sheets to see if you are progressing every week or not. So that will be a great way to keep you on track as you're progressing here. So this is it from my end. If you have any questions, you can start shooting.
All right, ladies. So I think that was one wonderful, insightful session. काफी लोग काफी serious हो चुके हैं because now they are like, अरे हमें हमारी health पे काम करना पड़ेगा and pizzas और burgers छोड़ने पड़ेंगे, and that is not a very good news to hear. Actually, I'm sorry, but I do not agree. But the point is, these people have to win a pageant and they need to take these things seriously. But coming back, of course, if you guys have any questions, you can put your name into the chat box. I will ask you to unmute and we can proceed like we always do. Harry, again, they have made a pledge and I'm going to be there with them, watching them what they're eating on their plates. So Pratibha has a question. Pratibha, you can go ahead. Good evening, ma'am. Good evening. Ma'am, I have two questions. One, I have already written in chat box. Mera first question is कि ma'am, price wise, there is remarkable difference between virgin coconut oil and parachute coconut oil, ma'am. And I have used both. I can say that जो virgin oil है काफी late है. We can't feel बहुत lightweight है कि हमने कुछ apply किया है skin पर या face पर या बालों पर, बहुत lightweight है मैम. बट मैम प्राइस में काफी डिफरेंस है, तो क्या उतना फायदा, जो ऐसा तो नहीं कि पैराशूट वाला जो ऑयल है वो टोटली डुप्लीकेट ऑयल है? इज दैट रियल नारियल ऑयल जो ब्लू शीशे में आता है मैम? तो इनका कितना रियल है कितना फेक है, बस ये पूछना है, क्योंकि प्राइस का काफी डिफरेंस है मैम. I think you can get the answer by just turning because we should not be naming the brands, just turning the packets behind and reading through कि उसमें क्या क्या ingredients available है. Because firstly, you're applying it on your skin, right? Not facial skin, ma'am. On body, ma'am. On limbs, on legs, mainly I apply after bath once a week, ma'am. Once a week only. This is the question that you asked me earlier. Yes, ma'am. Yes, ma'am. I have written in chat box also. Okay, let's talk about consumption, no? Because I'm talking about food and nutrition. I mean, what are you consuming? Then ma'am, you have talked about vitamin E, ma'am. तो vitamin E के बारे में ma'am, I always believe कि मैं intake करूँ vitamins का, minerals का, instead of applying from outside. But what I have heard from other ladies कि after age of 40 you should apply vitamin E serum आता है, कुछ serum और gel face पर apply करो तो wrinkles नहीं आएंगे, आपका aging will be delayed by 5 years, by 10 years. Is that real या ऐसे ही है ma'am? Ma'am, applying जो सीरम की बात होती है. Application, yes. So I am definitely not the right person for applications because it's about the skin and I'm not the specialist there. But मैं सप्लीमेंट के बारे में बोल सकती हूँ. और दो चीजें जो मैंने मेंशन की आगे कि सैफलॉर ऑयल और विटामिन व्हीट जर्म में वो चीज अवेलेबल है, बट बहुत स्कार्सिटी में, इसीलिए अक्सर लोग विटामिन ई की सप्लीमेंट्स ले लेते हैं. और सप्लीमेंट्स इज नॉट अ बैड थिंग. अगर आपको जरूरत है आपकी बॉडी को तो इट्स अ क्लियर कट तरीका, क्योंकि साइंस हैज प्रोग्रेस दिस मच, तभी लोग कैल्शियम खा रहे हैं. और व्हाई वुड दे कंज्यूम कैल्शियम? क्योंकि जैसे फॉर एग्जांपल one of the brands have calcium and vitamin D both, and we know that they are best friends, right? Vitamin D की absorption के लिए calcium की जरूरत होती है और vice versa. So if there is a supplement available in the market, it's available for a reason. So you can definitely go for it अगर scarcity है. For example, vitamin D हम सब अभी अगर हम टेस्ट कराए तो lot of people will be vitamin D deficient. Similarly, vitamin E की availability ही नहीं है. So अगर application के बारे में आपको जानना है तो I'm not the right person. Supplements you can definitely have if your body requires so. Supplement once in 15 days or once a month, ma'am. Vitamin E capsules are there at my home, but I am little reluctant. I would like to know your details personally, and then I can tell you कि आप इतने micrograms use कर सकते हो. Right. I will contact you on Instagram. Yes, please. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you, Pratibha. And let's hear it from Ankita Toshniwal. I think she has a question. Ankita, go ahead. Yeah, hi, ma'am. Hello. I have a question regarding hair health. Like what to consume for hair health, for good health of hair and glowing skin of face. So I remember the last slide I mentioned. वो सारी चीजें आपकी हेयर की हेल्थ को बहुत इफेक्ट करती हैं, स्पेशली द इंटेक ऑफ सेलेनियम एंड इफ योर प्रोटीन इज इंटैक्ट. तो जो मैंने कहा था, जो आपकी डाइट एंड एक्ने वाली जो मैंने मेंशन की थी कि ये ओवरऑल स्किन, हेयर और what you call it, nails, ये तीनों चीजों को इफेक्ट करती हैं. तो ये आप हमेशा ध्यान में रख सकते हो. जो
कि आपकी जिंक इंटैक्ट हो, आपकी सेलेनियम इंटेक इंटैक्ट हो, आपकी इवन ऑयल इंटेक इंटैक्ट हो, जो मैंने जो चीजें मेंशन की थी. इफ यू वांट आई कैन share it again with you. So these are the things that you have to take care for. और external treatments भी करते रहना है आपको while you are doing all of it, क्योंकि the pageant is close and you have to look glowing and charming all the time. Yeah, definitely. Thank you, Ankita. Thank you. And next we have Anita Kumari. हेलो मैम, मेरी आवाज आ रही है क्या? थोड़ा वॉइस प्रॉब्लम आ रहा है मेरा. जी जी. हेलो आप- मैम, आवाज आ रही है मैम? बिल्कुल. वीडियो ऑन नहीं हो रहा है, पता नहीं क्यों, कुछ इशू हो रहा है. मैं क्वेश्चन पूछ सकती हूँ मैम? हाँ जी प्लीज पूछिए अनीता. मैम मेरी एज 40 है, 40 है. मुझे ये जानना है, ऐसे बेसिकली मैं ठीक हूँ, स्क्रीन पे तो आ नहीं रही हूँ, लेकिन मैं बिल्कुल ठीक है, तो आई कैन अज्यूम कि आप बहुत हाँ, नहीं एक्चुअली फेस देखने से भी बहुत कुछ आप लोग को पता चल जाता है. मैम बस मैं ये जानना चाह रही थी कि अब मेरी ये एज है और मैंने इसमें लाइन में आ चुकी, तो मैं प्रॉपर फिटनेस रहने के लिए क्या क्या करूँ? क्या मुझे जिम भी जानी चाहिए? और फूड चार्ट के बारे में थोड़ा सा और जानना चाहती हूँ, बिकॉज की 40 हो गई हूँ, तो थोड़ा तो ज्यादा और लोग से मुझे चाहिए ही चाहिए. See, age is just a number, Anita. तो आप एज की फिक्र मत करो. पहली चीज, जिम is not the criteria. The criteria is your physical fitness. So अगर आप physically strong feel करते हो with little amount of workout also, you are sorted. लेकिन एक physical activity, अगर आपने कोई भी अभी तक आप क्या किसी physical activity में involved हो, walking, running या कुछ भी आप करते हो? मैम मैं टीचर हूँ, तो थोड़ा हो जाता है, क्योंकि प्ले स्कूल टीचर हूँ, तो बच्चों के साथ थोड़ा रन होता है पर डे, थोड़ा थोड़ा एक्सरसाइज योगा थोड़ा बहुत हो जाता है. उसके अलावा तो ऐसे कुछ नहीं करती हूँ. मैं चाहूंगी कि आप डेडिकेटेडली अपने लिए भी कुछ ऐसे करो, 30-40 मिनट्स अपने साथ गुजारो डूइंग अ फिजिकल एक्टिविटी. दैट विल रियली हेल्प. एंड कमिंग टू द फूड, अगर आप डेली बेसिस पे सारे मील्स को अगर बैलेंस करके खाओगे, जैसे ब्रेकफास्ट में फॉर एग्जांपल एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट से ओट्स या की रोटी, मैं बस एक एग्जांपल दे रही हूँ एक प्लान का, और साथ में आप अपनी एक सर्टेन नंबर ऑफ कैलोरी के हिसाब से सब्जियां, मिक्स वेजिटेबल, अगर आपने वो खा लिया तो आपका ब्रेकफास्ट सॉर्टेड है. इसके अलावा आप उपमा, पोहा ये सब भी खा सकते हो. ये सब जो मैं कह रही हूँ ये बहुत वेग है, क्योंकि इसमें मैंने नंबर मेंशन नहीं किया है. ओके, जब भी हम डाइट बताते हैं तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कितने ग्राम कंज्यूम कर रहे हो. वो क्या आपने आपके डाइट के बॉडी के हिसाब से क्या 30 ग्राम्स की जरूरत है या 40 ग्राम्स की जरूरत है? सो आई एम जस्ट सेइंग द इंग्रेडिएंट्स. नंबर आपको आपकी बॉडी के हिसाब से डिसाइड करना होगा. प्रॉबेबली जब हम दोबारा मिलेंगे तो मैं टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर के बारे में बात कर सकती हूँ, जिससे यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि आपकी कैलोरी रिक्वायरमेंट कितनी होनी चाहिए. मैम एक और क्वेश्चन है, मैं पूछूं? जी जी मैम मेरी हाइट के अकॉर्डिंग बेसिकली लोग बोलते हैं कि मेरा वेट कम है, मतलब 5'7" है और मेरी हाइट, और मेरा वेट जो है 56 है. आपकी आइडियल बॉडी वेट 65 किलोज होनी चाहिए. हाँ, बट मुझे ये लगता है कि मेरी वेट बढ़ी तो कहीं मैं फैटी ना हो जाऊं, मेरी फिगर का मतलब फिगर से ज्यादा ही कुछ लगा हुआ है, फेस से ज्यादा. हाँ नहीं, एक्चुअली आइडियल बॉडी वेट और बॉडी फैट परसेंटेज भी मैटर करता है नीता, कि आपकी बॉडी सर्कमफ्रेंस कितनी है. उसके बेसिस पे देयर आर लॉट ऑफ टेक्निकल टर्म्स दैट वी हैव टू अंडरगो टू ब्रिंग अप अ फॉलोइंग नंबर, जब वो फाइनल नंबर जो निकालना है कि आपकी कितनी होनी चाहिए आइडियल बॉडी वेट. लेकिन ये है कि आपकी हाइट के हिसाब से 65 किलोज होना चाहिए. लेकिन अगेन बॉडी फैट परसेंटेज बहुत रोल प्ले करता है इसमें. लेट मी अगर जैसे आपकी जो वेस्ट सर्कमफ्रेंस है, हिप सर्कमफ्रेंस है, ये सब चीजों से आपकी बॉडी फैट परसेंटेज निकलेगी. एंड देन डिपेंडिंग अपॉन विच एक डाइट प्लान क्रिएट होगी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. सो वरी नॉट. यस, आपने सही कहा था, शायद मुझे आपको देखना चाहिए, उसके बाद आई विल बी एबल टू जज बेटर. यस मैम, पता नहीं वीडियो क्यों नहीं ऑन हो रही है. नो प्रॉब्लम्स. ऑलमोस्ट सबसे ज्यादा टेंस यही है, मैं सीरियसली इस डाइट को फॉलो करना चाहती हूँ,
क्योंकि जब से मैं फॉरएवर में बोली हूँ तो वो क्या है, खुद से ही प्यार करने बैठी हूँ कि भाई अपने को अच्छा रखना है, फिट रखना है, सुंदर रखना है। तो Isn't ये it? चीज आ रहा है, तो फिटनेस सबसे जरूरी है मैम। बिल्कुल बिल्कुल, आई कंप्लीटली सेकंड यू। अपने आप से प्यार करना बहुत जरूरी है और उससे पहले अपना ख्याल रखना जरूरी है। यस मैम। तो वो तो फिटनेस के बाद ही सारा चीज होगा, तो इसीलिए मैं थोड़ा वरीड थी कि मैं क्या क्या मुझे खाना चाहिए। वैसे मैंने पूरा जितना भी था मैंने सारा नोट कर ली हूँ मैम। हाँ जी, ग्रेट। सी यू ठीक है अराउंड। मैम। ओके, मैं इंस्टा पर आपको मिलती हूँ मैम। बिल्कुल। ओके। ओके, थैंक यू मैम। वेलकम। Okay, next we have Vishwa has asked a question. Vishwa, you can unmute yourself and ask it. हाय मैम। हेलो विश्वा। मैम मेरा क्वेश्चन है कि मैं वेजिटेरियन हूँ तो मैं फिश ऑयल यूज नहीं कर सकती, तो उसका कोई ऑप्शन है? हाँ, वॉलनट ऑलिव ऑयल मैंने कहा, आप वॉलनट्स ले सकते हो, ऑलिव ऑयल ले सकते हो। वॉलनट पसंद नहीं है। कोई नहीं, दवा समझ के खा लो। तो ओके ये दो दो तीन ऑप्शंस आप यूज कर सकते हो। ओके, थैंक यू मैम। Next is Dhwani. Hi Dhwani, you can ask a question. Hi, I'm so sorry due to some network glitch, I'm unable to switch on my video. My question is a little bit personalized. Actually, early in the morning, the first thing that I used to drink was warm lemon water. But 1 month ago, I have been facing issues after that. Like the entire day, the day I consume lemon water, I'd be having rashes the entire day. I don't know. I have the side effects only like for this 1 month, and I'm unable to drink that. And I used to drink that before. Okay. So what is the reason that this is happening to me? You should check for your allergy, go for your allergy test. Probably you've developed an allergy with certain ingredient. Maybe it could be lemon or it could be other ingredient which is interacting with it. So you should go for an allergy test and, check for that ingredient, because there have been instances where, my clients have been, struggling with this kind of rashes and stuff. And finally 80 food items se unko allergy thi. And he was supposed to be with me for weight gain. So, the struggle. Hence, you can try that, Dhwani. Okay, thank you so much. Thank you so much. It really helped me. I did ask my doctor, and he was like, "You can try drinking it again. It might be a little bit psychological that'll happen to you for once or twice. So you developed it mentally that if you drink it, you're gonna have it. So it can even be that." That is what he told me, because I used to drink it like for 1 year exact. I used to drink it every single day. Then all of a sudden, this happened to me, and I've stopped drinking it at all. See, there are times wherein you undergo a lot of different changes internally also, and externally also. Recent times maybe we have been home and doing stuff, so there could be things that develop eventually. Say at the age of 20, whatever I used to be, and however strong I used to be, I'm not the same right now. I may have developed certain things. So if you think this is mentally, it is completely your call. Yeah, everyone has like different perspectives. My doctor said it might be mentally. My mom said that it might be my hormones because I turned 18 this year. So it might be because of that as well. Yes, that could be. That could be. Okay, thank you so much. You're welcome. Next we have Akansha. Akansha, you can unmute yourself. Akansha, if you're speaking up, mute pe ho. Hello. Yes, hi Akanksha. Hello, am I audible, ma'am? आकांक्षा, आप अपना मैसेज चैट बॉक्स में डाल दीजिए, बिकॉज आई थिंक आपको सुनना विल बी नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, जितना शोर आपके बीच से आ रहा है. Yes, we'll read your query. Nivedita. Right now my voice is clear.
आकांक्षा, आपका आवाज बहुत ब्रेक हो रहा है. एक तो नेटवर्क इशू है और देयर इज सम मेजर बैकग्राउंड chaos happening. So please अपना क्वेश्चन चैट बॉक्स में डाल दीजिए. एंड निवेदिता, you can go ahead with your question. Hi, Mary. Hi. Hello, ma'am. Hello. Yes, ma'am. मैं ये पूछना चाहती थी कि मतलब मेरा जो हाइट है वो 5'5" है एंड जो मेरा वेट है वो 55 है. Is it okay? Your ideal body weight is around 62.5. जैसे मैंने पहले कहा, it mostly depends on your body fat percentage also. अगर आप lean muscle mass gain करते हो, lean muscle mass हम gain करते हैं अच्छी खासी muscle training से और अच्छे खासे प्रोटीन इनटेक से. अगर आप वो गेन करते हो तो यू विल बी एबल टू गेन वेट एंड द वेट विल गो इन द राइट प्लेसेस. सो यू मे अभी आप फिजिकली कैसे दिख रहे हो, अगर आपको उसको इम्प्रूव करना चाहते हो, क्योंकि यू विल सी लॉट ऑफ एक्ट्रेसेस कमिंग इन अ सर्टेन वे एंड देन दे ग्रो इनटू अ सर्टेन वे. दिस इज ऑल डन बाय मसल टोनिंग. तो कैसे वर्कआउट करते हैं निवेदिता, तो अगर आप करेक्टली वर्कआउट, इफ यू वांट टू रियली गेन, तो गेन ऑन मसल मास. खा कर गलत चीजें खा कर गेन नहीं करना है हमको, राइट? हमें लीन प्रोटीन्स खाकर और मसल ट्रेनिंग करके आप गेन करोगे तो यू लुक रियली रियली ब्यूटीफुल. ओके मैम, थैंक यू मैम. मैं एक और क्वेश्चन पूछना चाहती थी कि मैं जो भी खाती हूँ वो सब मेरा जो फिगर है वो मेरे फेस बहुत पतला है और मेरा जो बॉडी है वो मेरे फेस से थोड़ा फैट है. मैं जो भी खाती हूँ वो सब कुछ मेरे थाइज में चला जाता है. तो मैं ऐसा क्या खाऊं, मतलब क्या करूं कि मेरा फेस में थोड़ा इफेक्ट आए, मेरे बॉडी में ना उतना इफेक्ट ना हो. वेल, आई विश कि ऐसे कोई सबमरीन होता छोटा सा जो मैं बोलती ऐसे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली फूड अपना तरीका खुद ढूंढता है. लेकिन क्या आप मुझे बता सकते हो कि आप क्या फिजिकल एक्टिविटी करते हो? नो मैम, मेरे को जब लगता है कि मेरे थाइस थोड़ा मोटे हो गए मेरे बॉडी से, तो तब मैं थोड़ा एक्सरसाइज कर लेती हूँ, फिर थोड़ा कम हो जाते हैं, फिर नॉर्मल हो जाती है. आपको आपका जवाब मालूम है ना, आपको डेली बेसिस पे करना है, क्योंकि फूड डिसाइड नहीं करता कि मुझे जाके कहाँ जमा होना है. फूड जैसे कि दवा पूरे बॉडी में असर करती है, फूड भी पूरे बॉडी में जाकर असर करता है. तो वो डिसाइड नहीं कर रहा कि वो आपकी जेनेटिकली एक हो सकता है कि वो जाके थाइस में हो रहा है, क्योंकि वो जेनेटिक्स में आता है. कुछ लोगों का लोअर बॉडी, वो आपने देखा ही होगा, एप्पल शेप होता है, किसी का पियर शेप होता है. तो उसके लिए आपको फिजिकली एक्टिव होना बहुत जरूरी है, क्योंकि पहले कहा करते थे कि फूड एंड न्यूट्रिशन 80% है और 20% वर्कआउट है. अब 50-50 है, क्योंकि हम अब all of us in fact, we are not sitting, nobody sitting on the floor today, right? Everybody seated on westernized chairs. So हमारी एक्टिविटीज ही कम है, तो हमें रोज एक्टिविटी करनी पड़ेगी. इसीलिए प्लीज continue with some kind of physical workout, you will be sorted. Okay ma'am, thank you ma'am. You're welcome, Nivedita. Thank you. And Sakshi, the last question for the day is in the chat box, if you could read it. Yes, I'm reading. Akanksha's glow is going away because of a busy schedule. So you have to eat well. मैंने बहुत सारी चीजें, अभी मैंने किसी और को भी बताया था कि जो मैंने लास्ट स्लाइड थी मेरी, जिसमें वो 5-6 चीजें मेंशन थी: हाइड्रेशन, एसेंशियल फैटी एसिड्स, प्रोटीन्स, विटामिन ए, डी एंड ई. ये सब चीजें अगर आप इंटैक्ट रखते हो अपने डाइट में, तो वो डायरेक्टली आपकी स्किन, आपकी बॉडी, आपकी हेयर और आपकी पूरी इंटायरली आपकी इंटायर बॉडी को इफेक्ट करती है. Okay, she has fat in her tummy area. So what exercises are you doing? You should follow a regime in terms of an exercise. Let me just complete your question पहले, आपकी skin और आपकी face के बारे में. See, no matter what, apply a sunscreen, whenever you start from your home from 7 to 2. Okay, let me finish. It's distracting me. So, go for your, firstly, take care of your skin externally. Internally, जो मैंने चीजें mention किए हैं, if you've taken a screenshot or if you want to personally reach out to me, I can send you a screenshot of that on Instagram or my number you will have. तो वहाँ पे आप कर सकते हो. I will help you with that.
And about the exercise, you are doing it at home, right? So it's all right. आप still आप home based workout कर सकते हो. अगर आपको लगता है आपकी core area में fat इकट्ठा हुआ है, तो आप sit ups और leg raises करो daily basis पे, and you will be really seeing a change in 10 days time. पर regularity maintain करनी होगी. Don't take breaks unless it's very very necessary. क्योंकि अब time we have less time, so we have to buck up on this. Yeah. Akanksha, I hope I answered your question. Thank you so much, Sakshi. Thank you. And it was lovely having you here today, like always. And I'm sure the women are waiting forward for even more and better sessions and lots of insights to learn from. Thank you so much. Thank you. I hope the ladies had a wonderful time. We see you again. And should I share the Google slide link again? So Yeah, you could do that. Yeah. They could take a last save of it. Let me help you with it.